Assalamu alaikum. In the previous video, we have just discussed about the female cycle, female ovarian cycle. We have discussed about the ovarian cycle, in which follicular phase, ovulatory phase, luteal phase. We have almost discussed about it, but the luteal phase just continues for the 14 days. It has got some variations in various females, but it lasts for almost 14 days in most of the women. After that comes the endometrium or uterine cycle, in which I told you previously that proliferative phase runs under the influence of the estrogen. Like in the follicular phase of the ovarian cycle, FSH levels are increased, and that FSH is responsible for the production of estrogen from the granulosa cells, and that particularly estrogen comes and it prepares the endometrium for the proliferative phase. It increases the glandular structures, and it also increases some other like vessels, vasculature, etc. is also increased in response to the in response to that estrogen. And we can say that endometrial thickness increases from 0.5 mm to 3.5 to 5 mm at the end of the proliferative phase के 0.5 mm की जो एंडोमेट्रियम है वो 3.5 to 5 mm उसकी थिकनेस हो जाती है इस पर्टिकुलर proliferative phase के अंदर. And I have told you in the very first video of the menstrual cycle that secretory phase runs along with ovulation, but that was by mistake. Actually the secretory phase runs along with the luteal phase of the ovarian cycle. उधर ovaries में luteal phase चल रही होती है और इधर आपके जो uterus है उसके अंदर secretory phase चल रही होती है, and it is also of around 14 days. Now, what happens that after increase in LH surge, we know that ovulation occurs, and after that, some structures are released, and corpus luteum also forms. And in response to the corpus luteum, and from the corpus luteum, actually progesterone is released, and that progesterone comes here, and it is responsible for causing the secretory phase in the endometrium. In response to the progesterone, what changes occur in the endometrium? In response to progesterone, endometrium becomes more vascular, endometrium becomes more edematous, more swollen. Here, arteries also become spiral shaped, granular structures also become tortuous, and the uterus becomes more warm, more soft, and more mother like. It means it still has some ambiguity कि शायद जाइगोट आ जाए, शायद जाइगोट आ जाए, इसलिए इसने इम्प्लांटेशन के लिए खुद को तैयार करते रहना होता है even during the secretory phase. But when sperm doesn't come, then it will obviously shed. So what happens when corpus luteum just undergo degeneration and it is converted into the corpus albicans? We have discussed it very detail in the previous video. So whenever corpus luteum starts degenerating, there is no progesterone, and there is no progesterone again to maintain this secretory phase in the females. And so as a result, the endometrium starts shedding, and it results in the sloughing off of the cells of the endometrium, and these shedded off cells are the cells that occur in the female menstrual blood. And it is normally 20 to 80 ml blood that is lost in females in the menstrual cycle, right? Actually the uterus has got three layers. You know that if this is the female's uterus, it is again a very rough diagram. If this is the uterus of the female, then there are three layers. Inside there's compact layer, after that there is the glandular layer, and after that it has got the basal layer. Okay, it has got the basal layer. These two layers, this one and this one, it means the compact and glandular layers, it is called functional layer, and this layer is shed off in the case of menstruation. Both these layers are shed off, but the basal layer doesn't shed off, right? Okay, so remember that after and the menstrual cycle actually menstruation, not menstrual cycle, menstruation continues for almost on average 7 days, but in some females it can vary between 5 to 10 days as well. ओके सो जस्ट रिमेंबर कि जब एक दफ़ा मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गई, न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल ने स्टार्ट होना है, अब क्या होगा, दोबारा से वही साइकिल चलेगा हमारे पास, क्योंकि अब नाउ after menstruation progesterone levels are again decreased, and we have studied already that whenever the progesterone levels are decreased,
देन दे विल रिजल्ट इन द इंक्रीज्ड एफएसएच एंड एलएच। अब फिर सिग्नल्स जाएंगे हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो है वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को भेजेगा और हमारे पास क्या होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच को भेजेगा। एफएसएच अगेन आएगा, वो आके स्टिमुलेट करेगा प्राइमरी फॉलिकल्स को, सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट कराएगा। सेकेंडरी फॉलिकल्स फिर क्या करेंगे कि वो जो सेकेंडरी फॉलिकल्स की जिनकी हमने बात की थी वो फिर से जो है वो एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। एस्ट्रोजन आएगा, यूट्रस को स्टिमुलेट करेगा कि प्रोलिफरेशन कराए, प्रोलिफरेटिव फेज़ यहाँ पर फिर से शुरू हो जाएगी। और उधर से फिर जब हमारे पास एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो एलएच की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और एलएच की प्रोडक्शन की वजह से हमारे पास ओवुलेशन हो रही होती है ड्यू टू एलएच सर्ज। और फिर वो जो जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो वो प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन को ज़्यादा करता है। प्रोजेस्टेरोन यूट्रस को भी आगे तैयार करता है मज़ीद, उसको वार्म, सॉफ्ट, स्वोलन, टॉर्चुअस, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स को बढ़ा देता है, आर्टरीज को स्पाइरल बना देता है, जिसकी वजह से यूट्रस मज़ीद तैयार हो जाता है ज़ायगोट को रिसीव करने के लिए, उसको वेलकम करने के लिए। लेकिन फिर कॉर्पस ल्यूटियम के पास बीटा एससीजी नहीं जाता तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस भी नाउमीद होकर फिर शेड आई एम सॉरी एंडोमेट्रियम भी नाउमीद होकर फिर शेड ऑफ होनी शुरू हो जाती है। और फिर मेंस्ट्रुएशन जब ख़त्म हो जाती है तब आपको पता है प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स भी नहीं है। और हमने पढ़ा है कि जब कभी भी प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स ख़त्म होंगे या कम होंगे तो एफएसएच और एलएच की प्रोडक्शन दोबारा बढ़ जाएगी और इसके रिजल्ट में हमारे पास एक नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू वेरी मच।